going to start our next chapter, that is chapter number 15, polygons. So firstly, we should know what are closed figures and what are open figures. So in a closed figure, the starting and the end points are the same. Like this, suppose we are starting to make a circle, we'll end over here. We are making a square, we'll end over here only. We are doing this one, so we'll end over here. So all these are closed figures. And in open figures, it means like this one. The end points and the starting points are never the same. So these are closed and open figures. Now we will see simple closed figures. Simple closed figures. So what are those? Like this one, okay. This one is a simple closed figure. This one is a simple closed figure. This is a simple closed figure. But not this one, okay. They should not intersect. The point is that these closed figures should not intersect. So these are all simple closed figures. So now we will do our definition of the chapter. What is a polygon? So a polygon is a simple closed figure made of 3 or more than 3 line segments. Made of 3 or more than 3 line segments. A simple closed figure made up of 3 or more than 3 what? Line segments. So let us study about polygon first. I will be drawing a polygon, okay. Like see, I am drawing this one, a 4-sided polygon. 4 sides है इसमें, 1 2 3 4. इसका I will put name ABCD, okay. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं sides. जो ये है, ये क्या है, इसकी sides है, AB, BC, CD, DA. आप इसको DA भी बोल सकते हो, इसको AD भी बोल सकते हो, इसको AB भी बोल सकते हो, BC भी बोल सकते हो. तो हम इसकी साइड लिखते हैं सबसे पहले. कैसे लिखेंगे? वील राइट AB, BC, CD एंड DA, ओके. सबसे पहले हमने हमारे पॉलीगन्स की, वी आर राइटिंग द साइड्स. नाउ वी विल राइट द वर्टिसेस. वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स. सो दे आर A, B, C एंड D. देखिए 4 ही कॉर्नर्स है जहाँ पे साइड्स मीट कर रही हैं. So these are vertices. Now we will write adjacent sides. Adjacent sides कौन सी होती है? Adjacent sides का होता है pair. कैसे? जैसे जो उन दो sides में एक common point है, जैसे देखो AD में और AB में common point है A, तो हम एक साथ लिखेंगे AD and AB. Similarly B common point है AB में और BC में, तो we'll write AB and BC. तो इसी तरीके से we can write 4 pairs. Now we will see the last, that are diagonals. Diagonals मतलब जो opposite vertices को join कर रहे हैं, उन lines को हम कहते हैं diagonals. यहाँ पे diagonals हैं AC and BD. So this is the thing that you have to keep in mind. Now we will see कि अलग अलग टाइप के पॉलीगन्स को हम लोग क्या कहते हैं. जैसे a polygon with 3 sides, जिसकी 3 sides होती हैं, उसको हम कहते हैं triangle. What we say? Triangle, okay. Similarly, अब जिसकी 4 sides होती हैं, 4 sides, उसको हम कहते हैं quadrilateral. Quad का मतलब is 4, इसलिए इसका नाम है quadrilateral. अब quadrilateral में we have that types: square, rectangle, rhombus, kite, trapezia. All these are 4-sided polygons, no? But in all अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे polygon with 4 sides is known as quadrilateral. Similarly 5 sides का लिखते हैं, तो we will call it pentagon, ओके. इसी तरीके से 6 sides का लिखते हैं, तो we will call it
हेक्सागन, 7 साइड्स का लिखते हैं तो वी कॉल इट हेप्टागन. ओके. एंड अगर हम 8 साइड्स का पॉलीगन कहें सो वी कॉल इट octagon. So this is the thing that we have to keep it in mind कि अलग अलग sides के polygon का we have different names. Now you will be able to solve all the questions of exercise 15A. Thank you.